Hello, everyone. This is Mac here. I am a YouTuber on YouTube, which is my channel is called Mac Vlogs. I would like to welcome Miss Syeda Nazea. She is a lifestyle consultant and a special branding coach. Am I right? Thank you. Yes, you're right. And I'm it so is sorry pretty for much little visible to blurbering. no So problem. welcome to the channel today. So it's Thank you so really much. lovely to have you and talk to you about connecting the minds, which you're doing a great job in connecting different minds in Pakistan about different people, different personalities. So, what do you have to say on that? Well, the topic today, which is connecting minds, it's all about how people from across the globe can come together. You have a different perspective, I have a different perspective. As people, we are bound to have different inclinations towards our thought processes, right? So Mm, we connect with each other and we share our different experiences, our journeys, and how we can inspire each other and how we can benefit from each other by piggybacking on each other's back and growing together. This is all about internal growth and personality development, which is what we work for, right? We will just take a second so that Matt can also share this live stream on his platforms. Just give me 1 second so that I can tag him. sure, definitely. Gee. You are tagged, Mac. If you can visit my wall, my Facebook profile. This is all about internal Okay, growth and yes. So we are already getting comments. I will make them visible here as well. We would like to sure. share what everybody is saying and who everybody has joined in. Thank you so much for connecting. So we would be keeping it majorly in English because Mac की major audience जो है वो English speaking है. So we are Okay, across the world now. जी. true. Okay, my first question to you would be that how did you get involved in self-branding of yourself and taking this initiative of helping the people out there to brand themselves? Well, Max, जैसे कि मैंने आपसे I discussed this earlier as well. Since I was 14 and I launched my first entrepreneurial venture, I printed my cards which read Nazea Make Over Your Life. And I thought I was good in, I always wanted to reshape the way people thought and the way they perceived themselves. And I wanted to make them look beautiful and I wanted them to feel good about themselves. So I thought that's what my ambition or my true calling was. That's what I was passionate about. And then somehow when I did my internship, I started like with NetSol IR and ITC in Asia in the year 2000, which is like 20 years back. So I trained a lot of people for PIA call center, NCR, Avaya technologies, Americom technologies, and Indus Vision call centers for customer care, for handling calls, and So वहाँ से I realized that I was always potent. I was always clear in my head that even though I was 18, 19 years old at the time and I was an intern, I would still, manage to attract a lot of people towards me for some reason or the other. Usually it was like I could engage, I could connect, I had the personality, I was outspoken, I was always the head of, my class, or I was always the center of attention for some reason or the other. So I didn't realize it until a year and a half ago that I could, and I have been working on self development. I've been doing a lot of investment in my personal growth and the way I think and feel. I developed an incarnate workshop which was about mind and body and soul. Nobody talks about the divinity within. Nobody talks about the self. तो इकबाल टॉक्स अबाउट खुद ही, इलामा इकबाल जो हैं वो खुद ही के ऊपर बहुत बात करते हैं. तो उनका एक सेल्फ डेवलपमेंट सोसाइटी का एक ऑनलाइन कोर्स भी था अबाउट लुकिंग विद इन, और रूमी की बात हो रही थी वहां पे, एंड लुकिंग फॉर मास्टर्स आउटसाइड ऑफ योर ओन सेल्फ एंड सीकिंग विजडम. It was about self exploration. I think that's when I realized that
I am all about personality development and I'm all for branding. I didn't know this term back then, लेकिन obviously अपने आप को समझते समझते और अपनी grooming पे मुझे लगा अच्छा personal grooming इतना मुझे charming word नहीं लगता वो तो जब आप किसी को बताते हैं मैं जिमखाना में session deliver किया for the ladies members of Karachi Gymkhana, you're like grooming अच्छा you're gonna teach us some makeup, you know. I was like, no, it's about personality development. It's how groomed you are, your etiquettes, your mannerisms, you know. So what would you say Mhm. to that? This is a perception, right? People only think कि grooming सिर्फ good looks के बारे में होती है. What about the groomed Wow, mind? Personality is that's not the face, you know? that's true. That's true. That's totally true what you're saying. So my next question to you would be that as you see that we all are being locked up in this difficult time of coronavirus, so how can you influence people out there to stay positive and look after themselves and they can just work on themselves? So how do you train them digitally? Well, this is what we've been working on for the past few days since ever since we got into this self isolation and quarantine period or whatever. How to and how not to is another thing. I would say instead of calling it self isolation, I don't feel isolated. Probably because I Okay. have such a vast uh, world to explore within myself, and I have so much to share. There's so much, and I'm putting all that content out on the social media platforms, as you must have also seen, Hmm. and all the people who are here today. कि भाई, this is what happened, this is my story, and this is how we are. तो वो इफ यू लिव इन योर ओन बबल, शट योर सेल्फ आउट. हम ये डिटॉक्स की भी बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का डिटॉक्स हो गया या नेगेटिव लोगों का डिटॉक्स हो गया या किसी भी किस्म का. वी शट आउट द नेगेटिविटी. पहले तो न्यूज बंद, यू नो, मैं अपने रूम में हूँ, हाय कितना अच्छा है, इट्स लाइक अ वेकेशन. अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आप इसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो दिस जितनी तेजी से जितनी जल्दी दिस पेंडेमिक हैपेंड, it's going to go away like a whiff too. So we have to keep our morals up. आप एक दूसरे को Hmm. आप जैसे upliftment ही है ना. We are like connecting minds. You're taking my interview. You want to know my journey. I'm talking to other people. I'm sharing कि मुझे ये आता है. चलो मैं और आप एक दूसरे के साथ let's share our experiences. Let's Okay. connect and let's see कि मैं आपसे क्या सीख सकती हूँ, आप मुझे क्या सिखा सकते हैं, और मैं आपको क्या Mhm. वैल्यू एडिशन दे सकती हूँ आपकी लाइफ में. बिकॉज हो सकता है कि मेरा पर्सपेक्टिव आपसे थोड़ा डिफरेंट हो. मैंने दुनिया किसी और तरीके से देखी है, एक्सप्लोर की है, कुछ और मेरा व्यू है, सो वी हैव टू कीप ऑन ग्रोइंग ऑन इच अदर्स एक्सपीरियंसेस. एंड एक दूसरे के जर्नी से हम बहुत कुछ एनहांसमेंट, एनरिचमेंट तो बंदे की ऐसे ही होती है. Yeah, you're absolutely right. Again, we need to learn from each other's experiences and the way we have been handling ourselves. That's really important. And how we can bring the change to other people's lives. That's what you really mentioned it. So, yeah. So, I would bring another question to you. Means my another question would be that how are people not able to express themselves? Basically, why maybe they lack in confidence, right? But the trainer like you, who is a self-branding coach, who teaches people about the self-confidence or different aspects of life, how can Hmm. people come forward and connect with you and learn from you about branding themselves? Oh, how they can connect? Right now we are connecting, and there are so many people who are watching. Thank you so much. Sorry, ये comments यहाँ पे मैं visible नहीं कर पा रही हूँ, शायद मुझे setting उसकी इस वक्त नहीं करनी आई. But I guess regardless, everybody needs to be a little they're patient waving. with their There's a lot comments of and stuff. people who are just waving and sending. Okay, so how we can take our inhibitions off? एक चीज शायद a lot of people don't know about me. I have been to NAPA, that is National Academy of Performing Arts in Pakistan. Ziaul Mayuddin Okay. Sahab, Rahat Kazmi Sahab have been my teachers, and Talat Hussain Sahab, Arshad Mahmood. These are legends, and जिन्होंने नाम सुना है या नहीं सुना है. फिर एक्टर स्टूडियो कराची, अली शेख जो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, पारस, उनके साथ भी कुछ वक्त गुजारा है. प्लस न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से भी मैंने एक्टिंग के सेशंस लिए हैं ऑनलाइन.
पढ़ती रहती हूँ, ग्रूम करती रहती हूँ अपने आप को, कोर्स एरा के कोर्सेज करती रहती हूँ। फॉर दोज हु डोंट नो, कोर्स एरा इज अ वेबसाइट जो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज करवाता है, और हम्म, आपको सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो यू पे एंड यू गेट योर ऑथेंटिक सर्टिफिकेट। तो आईबीए में गई थी, बिजनेस कम्युनिकेशन सीखा, क्योंकि मुझे भी ये फियर था पब्लिक स्पीकिंग का। मैं एपटेक की 2 साल, तो आईटी सीखा, हर चीज बस आए, ये जबान आ जाए, ये काम आ जाए, ये नई चीज है दुनिया में, ये रिसर्च क्या है इसके ऊपर समझ में आ जाए, सीखते रहो, बढ़ते रहो, करते रहो, खलास। ये अपना इजी मंत्रा है, इसी मंत्रा के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो आई हैव रियलाइज्ड, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हम्म, एक पैकेज नहीं बन पा रहे। टैलेंट है, पोटेंशियल है, मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, बहुत ज्यादा सब कुछ है, एलिमेंट सारे हैं, कीज है, बट वो जो इनहिबिशन है ना, मैं एक्टिंग का एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो जो डर, शर्म, जजमेंट का खौफ, वो जो निकालना होता है ना किसी के सामने अपने आप को, एक कैरेक्टर में लाके, या एज अ टीवी होस्ट या एज एन एफएम होस्ट अपने आप को एक्सपोज कर देता है एक एक्टर, नेकेड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज समथिंग जो बहुत लोग कतराते हैं, शर्म आती है उन्हें, या वो घबराते हैं कि नहीं यार मुझे जज किया जाएगा, नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। सो इस तरह के जो सेशंस होते हैं ना, वहां पे पहली चीज तो ये होती है कि जो तुम्हारा अना का मसला है, योर ईगो, योर शेम, योर फियर ऑफ जजमेंट, ये सब तो पहले खल्ली कराओ, ठीक है। उसके बाद यू आर you have to have your ability to learn and the desire to become somebody in life. That is what we try to tell people, कि ऐसे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। बेसिकली ब्रांडिंग का वर्ड अगर नहीं भी बोले, जाती छाप का भी वर्ड बोले, तो हर बंदे में एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी होती है। आज मोइन अख्तर साहब की, जैसे हमारे पाकिस्तान के बड़े लेजेंड हैं, मैं उन्हें हर साल और हमेशा याद करती हूँ, और दुनिया भर में आई विश कि ऑस्कर लाइब्रेरी में उनकी आर्काइव्स रखी जाती हूँ। और he was one of a kind. But why are we talking about Moin Akhtar Sahab today? Because relevance, credibility. You earn your name. You are famous for so many right things. That is what a brand is about. ये सिखाना आसान नहीं है, ये आपकी अपने ऊपर खुद की इन्वेस्टमेंट है। आपने अपनी जिंदगी अपने ऊपर, अपने आप को ग्रूम करने पे अगर लगानी है, तो ये कोर्सेज आपको फायदा दे सकते हैं। वरना कोई जादू की छड़ी, कोई ट्रेनर, अगर मैं ट्रेनर, आप मुझे नहीं भी समझते, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं कोई भी हम्म, इंसान हूँ जिसका एक तजुर्बा रहा है जिंदगी में, और उसने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, उसने सीखा है अपने आप को निखारने में, संवारने में, एक शख्सियत, एक बनाने में खुद को। तो आप अगर विलिंग है और आपका इंटरेस्ट है, तो आप भी करें। Nothing can stop you. Who is stopping you except you? Don't do it through me. Yes. Do it through anybody who helps you. Whatever works for you. बड़े बड़े लोगों की Since कहानियां सुनना, या since I mentioned earlier that you're a lifestyle management consultant as well, right? आई एम। Okay. So in that scenario, in that situation of lifestyle, at the moment everyone is being locked up at their own homes, right? So how can they maintain their own lifestyle once the lockdown is over? What would you suggest to people out there? What does lifestyle mean to you, or means like you can explain about lifestyle? What is going on in Well, your lifestyle? right. It's a shift of a lot of dynamics. The world is Mm-hmm. going digital, and we are all one global village, and we are a global family. So अच्छी बात है कि दुनिया एक दूसरे से लिंकेजेस के थ्रू कनेक्ट हो रही है, और हम जुड़ रहे हैं, and this is all about connecting other minds and other people together through multiple forums and platforms. लाइफस्टाइल क्या होता है? पहले तो बात ये कि लाइफ क्या होती है, इसीलिए मैं एक शो करती हूँ जिसका नाम है लाइफ क्लास, जीना इसी का नाम है। Okay. क्लास का ये मतलब होता Okay. है कि भाई स्टूडेंट्स हैं, सीखने आए हैं, आप भी सीखें, मैं भी सीखूं, क्योंकि हर टीचर एक पॉइंट पे लर्नर ही होता है। लाइफ स्टाइल, उसमें आपकी हेल्थ, हेल्दी माइंडसेट, Mm-hmm. हेल्दी बॉडी, Okay. हेल्दी सोल, हम सोल की बात ही नहीं Fitness? करते। Is the It is fitness about involved in that? fitness. It is about fitness of the mind, depollute it, detox it, Okay. and then appearance, and then what you eat. अभी रमजान आ रहा है इंशाल्लाह, तो you are what you eat. Scientifically Mm-hmm. proven है, जब हमारे अंदर खाना जाता है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, थोड़े दिनों बाद वो खाना स्किन को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी सोच को कोई हैप्पी एंजाइम्स दे रहा है, कोई डिप्रेशन में ले जा रहा है, कैफीन ओवर डोज कर दिया आपने, या चॉकलेट जो है वो आपको हैप्पी फील कराता है।
तो हर चीज का असर इंसान की जात पे होता है, तो वो उससे मुतासर होता है। इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को, हमारा आजकल अपसेट हुआ है, नींद का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, और हम दूसरों को अगर सिखाएं तो इट True. डजंट सूट अस। बट सिंस वी हैव सो मच एनर्जी, हम मेडिटेट करते हैं, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, हम अच्छा अपने आप को गलत न्यूज से, नेगेटिविटी से और बुरे ख्यालात से कोशिश करते हैं, बीइंग ह्यूमन बीइंग, कि क्लेंस रखें, अपने बबल के अंदर रहें और अच्छा अच्छा ही सोचें, अच्छा अच्छा ही करें, और लोगों को जो एनर्जी आ रही है ना, जो गुस्सा भी बन सकती है, एंगर भी बन सकती है, वी चैनलाइज इट एंड I'm talking to you. I'm giving you a class. I'm meditating with you together. I'm telling you, हाँ, this is how you can apply makeup. This is how drink a lot of water. जब भी मैं लाइव जा रही हूँ, आपने देखोगे थोड़ी सी देर में पानी पीती रहती हूँ. Like, Okay. stay hydrated. Give yourself a good oxygen supply. And then it's about attire management. It's about etiquette. It's about ethics. Lifestyle is a huge umbrella जिसके अंदर personal branding या self branding, career branding, इतना सब element है, टिनी मिनी. उसके अंदर अगर आप एक सीईओ हैं, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा. हम पैंडेमिक में हैं, मैं मैनेजर हूँ या मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा कोपिंग मैकेनिज्म, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा डे टू डे रूटीन डिफरेंट है ना. तो एवरीबडी True. विल हैव टू हैव कस्टमाइज सॉल्यूशंस, which is what lifestyle is about. Lifestyle पहले तो हर एक को ये लगता है यार अफोर्डेबल नहीं होगा, ये कोई महंगी बातें हो रही है, which is true. लाइफस्टाइल एक लग्जरियस चीज है. अगर आपको लगता है कि हाँ जी, आई डिजर्व टू बी पैम्पर्ड, मैं स्पा जाऊंगी और मैं अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करूंगी और मैं अपना अटायर, अपनी एक्सेसरीज पे इन्वेस्ट करूंगी, आई वांट टू लुक गुड, मैं अपनी स्किन के लिए फेशियल्स करवाऊंगी, आर वी रियली इनटू दैट सेल्फ केयर? इट्स अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अगर I see. नाजिया अपने आप को एज अ थर्ड एंटिटी, जैसे फ्रॉइड ने कहा हमारी 3 सेल्फ्स होती हैं, ठीक है ना, मैं अगर अपने आप को ये ना कहूँ, यार वेरी गुड नाजिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, नाजिया यू आर द बेस्ट, अगर मैं ये ना कहूँ और मेरे से तो कुछ काम ही नहीं होता, मैं तो इतनी काली लग रही हूँ, मेरे तो दाने ही निकल आए, मेरे से तो बात ही नहीं होती, ओ माय गॉड, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आई एम गोना आई लाइक आई विल डिस्ट्रॉय माय लाइफ. पर्सनालिटी शैटर हो जाती है तो इंसान की जिंदगी में. कपड़े अच्छे पहन लो, मैंने 2015 से मैं यही बात कर रही हूँ, कपड़े अच्छे पहना दूंगी मैं आपको, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, आपका जो मेकअप हो गया, मेक Yeah, ओवर हो गया, बाल कट गए, या but what इट्स नॉट happened गोना is in बी this lifestyle, the word, people इजी. tend to connect with only fashion, but not the other categories of lifestyle. Some people think it's just fashion. Some people think it's travel, it's food, it's luxury, something. But we are now talking about fads, healthy diet. अच्छा, आप True. लाइफस्टाइल की बात करती हैं, आप भी क्या जिम इंस्ट्रक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं. I said it's a big umbrella of lifestyle, and everything is a small composite of it. So अच्छा, हमारी आईडीज वगैरह और सब चीजें चल रही हैं यहाँ पे. आप मैक जस्ट लेट मी चेक कि क्वेश्चंस अगर कोई आए हुए हैं सो दैट वी कैन Sure, एड्रेस please. देम Sure. इंस्टेड ऑफ टेकिंग. Let's have a look at the question आपके round. पास भी अगर आए हुए हैं तो आप भी देख लें, क्योंकि यहाँ पे हम सॉरी आज विजिबल नहीं हो रहा है, सो जस्ट मी सेकंड. No, even it's If not somebody appearing on has my. something to Sorry, share, if guys. you If any questions are coming, you can just write down on our wall so that we can get back to you. With Nazia can reply you accordingly and just give me some time as well to go through your questions as well. So we are just in the middle of the session, so we'll take care of all your questions if you write it down. Thank you. So Nazia, one last question. yes please. How will this session of ours will help the people to come and talk about their own life stories? I think this question is supposed to be addressed to the people who are connected with us right now, the audiences. Okay. Help, they can. And sorry. And just one more thing which I can add into it, plug into this is, are you taking the paid sessions or is just the free sessions? Like after the lockdown, do people, once they connect with you, will be there any location where they can come and have a session with you and you can have a class with everybody? These are paid sessions, yes, and they can have they can connect with me on my email address, which is scrolling down there, CEOI marketeer EER Okay. @gmail.com, and they're paid sessions, of course, because
I also have bills to pay. And Okay, I also true. do a lot of free sessions. But we Mm-hmm. announced them, like there is a 3-day skill challenge that's going on, and tomorrow is my session, so that's a free session. But it's only free for those people All who the are best. committed to. Ji, thank you so much. You attended one of my sessions yesterday and today, so आप अपना Yeah, it feedback भी was मुझे really दीजिएगा. awesome. So one of the speaker, she was talking about self-control and the minds and everything. So it was really amazing session we had yesterday. There is an expert for everything, but I believe I am no expert. I am no master, but I am different, and I do things the way. Every day is a learning process for everybody. As you say, nobody should underestimate themselves. So we should I go with don't. the time. I love myself. I am the best at whatever that I do. And Alhamdulillah, for those who have invested in themselves and who've taken paid sessions or unpaid sessions, whatever, as so long as they've engaged with my work-related, Hmm. sessions, तो उनका फीडबैक जो है ना वो जान डाल देता है इंसान के अंदर. True, Yesterday, true, उमेर was there today. आपने उमेर का थोड़ा सा सेशन अगर देखा था आज, तो true. he's one of my students, and then there were 2 other students. IBM के head हैं. I mean, like, I am a kid. How can I be teaching or tutoring or training such people of such caliber? Well, I want to I add three don't. things which I learned from my elders and especially my dad. Okay, those were the three important lessons of my life, which you can just forward in your network as well. Education tells us what to do, the training tells you how to do, How to and experience tells us what we should not do. not do. So we all are experienced people in this society, which is teaching us what we should not do. And we should learn from our elders and teach our younger ones through our experience what they should not be doing it, rather than going through those experiences themselves and having a very big setbacks and stuff. So it's really important. Three lessons. That's really important. That is. So I think we should take a couple of perspectives. Um, अगर कोई पूछना चाह रहा है कुछ, we will be here for a minute or so, and the rest आप YouTube पे मेरा पूरा इंटरव्यू देख भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको ये हो कि आज हमने कुछ ज्यादा इंग्लिश में बात किया है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि इनकी ऑडियंस जो है वो ज्यादा ग्लोबल है. एंड Alhamdulillah. Just trying to तो get the we global also people's want to. perspectives and It's stuff. amazing because हमें पाकिस्तान का अच्छा इंप्रेशन पूरी दुनिया को दिखाना है कि जी यहाँ पे भी I तालीम want to show the याफ्ता लोग positive हैं. image of Pakistan, so the That's people the should know purpose. that we have positive people, loving people, happy people who can come down to Pakistan and enjoy the great atmosphere here. देख लें, देखें कैलामिटी के फेस में, अगर हम इसको कैलामिटी समझते हैं, कोरोना है और हम इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, जॉब्स का फियर है, खाने पीने का लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब मुश्किलात हैं, और हम कह रहे हैं चलो हम तुम्हें इल्म देते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग आवरसेल्व्स थ्रू दीस ट्रेनिंग सेशंस. व्हाई वुड True. एनीबडी इन्वेस्ट इन दैट? Just like that, I told my teacher yesterday as well. मेरे टीचर हैं सर उसामा बिन इकबाल सर, अस्सलाम वालेकुम. बिकॉज सर को मैंने ये कहा कि जैसे देखिए हमने सेहत का और एजुकेशन का कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें लगता है कि इन चीजों की तो खैर है. अब जब True. सेहत इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि पैसा हेल्प नहीं कर सकता, और सेहत का ख्याल रखना, हाइजीन का ख्याल रखना, Everybody around the सफाई world has निस्फ understood ईमान है. this. Everybody भाई around the हमारे तो world has ईमान का understood this. हिस्सा था ना, सफाई निस्फ ईमान है. अगर हम अपने ईमान का ख्याल रख रहे हैं और हम साफ सुथरे रह रहे हैं और अपना हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, तो इस तरह की वबा और बीमारी और ये सब नहीं आती. और अगर आती है तो वी बिलीव, आई फील इट्स इन आवर बिलीफ सिस्टम कि ये दर्जा शहादत का एक छोटा सा लेवल है जो वबा से जिनकी मौत वाकई हो जाती है. तो रिगार्डलेस, दिस थिंग कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी पैंडेमिक, एनी वायरस, एनी जॉब चली गई, जॉब आ गई, बारिश हो गई, तूफान आ गया, अल्लाह की मर्जी. शुक्र अल्लाह का. Just remain calm, If happy, positive, and keep doing what you really enjoy doing in life. That's really I'll give you important. an example, Masroor. One thing, my mother, I don't want to say आगे क्या जैसे अल्लाह ताला जन्नत नसीब, I don't want to say that, but my mother, अगर किसी की मैंने इस तरह देखी है ना, लोग ये ना समझे कि नाज़िया कितनी बेहिस है, इतना बाहर लोग मर रहे हैं और ये ऐसे बात कर रही है कि
But on her last moments, in her last this thing, she was लूडो खेल रही You थी, can आराम see, से बैठी Nadia, हुई थी. I She can was the just only most say happy one thing. person. Yeah, you can just do one thing. That is, even if you don't do anything, people will still talk. And if you do something, people will still talk. So it's better I'm you saying, keep doing what you're good at doing it and what we all are good at. I mean, remain positive. So everything will fall into place. That's really important. People, you cannot shut negative people. You just need to keep them away and you do your positive work. क्योंकि लोगों को नहीं, because I will clarify that if we have a moment, because पाकिस्तान में लोगों को ये लगता है, एक तो ये कराची में भी स्पेशली कि पुल के उधर रहते हैं ना, तो हम अपने आइलैंड ऑफ पीस में रहते हैं. या कोरोना आया यार, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनके पास तो खाने को भी है, अपने घर में बैठे हैं, लोग रोडों पे सो रहे हैं, राशन नहीं है वगैरह. सो ये सब कुछ हमें पता है, एंड वी फील फॉर दैट, वी ट्राई टू पुट इन आवर बिट फॉर दैट, बट वी डोंट एडवर्टाइज दैट, बिकॉज ये भी हमें पता है कि राइट कर रहा है तो लेफ्ट को खबर ना हो ऐसा. लेकिन In अगर whatever, थोड़ी sorry, we can help in whatever ways we can because that's what we know. Allah has given the blessings to everybody and hope we can help everybody in Pakistan who are going through this, but we all have to play our role. So whatever the people are thinking, you can't change their mindset, but only thing is just stay with your loved ones, be at home, be indoors. That's more important. We need to be safe. I Am I right? haven't seen the sun, I feel like a vampire. That's true. Everyone is going. For the last 1 month, I have been in isolation myself. So, but still, I feel that I'm protected and I'm protecting Alhamdulillah. my family being home, Alhamdulillah. not going out. So that's really important. So So it was, thank you, thank you, thank you, thank you thank you, so thank much you. for having this session and Oh, there are some expressing wonderful yourself with comments. whatever experience you have I'm and so your sorry knowledge. we haven't been able to include the comments on the wall. I Uh, should have we're going seen to that. definitely reply each and everybody as we go after this session. So no worries about that. And thank you once again. So Thank everyone you. out there, please connect with Syeda Nazea on her Facebook, on her Thank you. LinkedIn, on her YouTube, on Instagram. She's a lovely person. She's going to train everybody with it. I'm a good person. Yes, she's a very positive person. So I came across that and the best part is I got connected with her through one of my common friend. That's how I was able to have a session with Miss Nadia today. So thank you so Wonderful. much. Thank It you was so really much for wonderful. having me. And Thank you. everyone, do subscribe my YouTube channel and her Oh YouTube yes, let channel me to help just, yeah. us grow together. Thank you so much, Nadia. Wish you all the best with all the blessings and all the happiness in life. Thank you. I wish you a lot of Take love and care. prosperity. Thank you a lot.